बहुत से कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर मेरा स्कोर 6, 6.5 बैंड से 7 पे नहीं जा रहा, मैं एडवांस नहीं हो पा रहा राइटिंग में, तो कारण क्या है? IELTS, PT and TOEFL can be compared with CEFR, which is called Common European Framework Required. The students, they start learning English, but they don't know how to make structures or sentences in English. कुछ स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया जाता है एयरपोर्ट से for buying a fake certificate. Hi, this is Jasvinder and I am working as an English language trainer. I have total 13 years of experience in my field. I've taught more than 10,000 students in my field. So I'm going to discuss about which test is going to be a good idea to choose, IELTS, PT or TOEFL for you. Now let me tell you which country accept which test. IELTS is accepted by more than 140 countries now, and PT is accepted, as per my knowledge, in more than 90 countries. And yes, if any student wants to prepare for IELTS, PT and TOEFL, I'm going to give you guidance about that. Being a proficiency exam, IELTS, PT and TOEFL can be compared with CEFR, which is called Common European Framework Required. It's a framework which has been set for the candidates who are going to study in an English-speaking country, and they need to pass that level. And mostly the level for higher secondary students is B2, which is intermediate level. And in IELTS, PT and TOEFL, that is also set that the scoring can be different. However, the score is B2, which is intermediate level in English. And if anyone wants to go for higher studies, for masters and any specific professional studies, the candidate needs to pass that C1, that means advanced level. And if I talk about the scoring in IELTS, that's 0 to 9 band scale. And if I talk about PTE, that's 0 to 90 scores are there. And in TOEFL, that's 0 to 120 scores are there. When it comes to the test fee, they are more or less the same. It would range between 16 to 17,000 for a candidate if a candidate wants to take IELTS, PT or TOEFL. And as per my suggestion, if you are good at computers, choosing PTE would be a good idea. And if you want to take a paper-based test, then going for IELTS is really a best thing. And TOEFL is the test which is widely accepted by Canada and USA. And I would suggest you that if you want to go to USA, then TOEFL would be a good idea for you. मैं आपको कुछ गलतियां बताने जा रहा हूं जो ज्यादातर लर्नर्स इंग्लिश सीखते वक्त करते हैं। वो ज्यादातर डिफिकल्ट वर्ड्स की तरफ भागते हैं। सबसे पहली जो चीज है, आपको कभी भी डिफिकल्ट वर्ड्स की तरफ नहीं भागना। आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेनी है, उसके ऊपर आप उस टॉपिक का नाम लिखें जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं। आपको हमेशा टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी ही सीखनी चाहिए। अगर आप टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी सीखेंगे तो आप उस वोकैबुलरी को इजीली यूज कर पाएंगे। अगर आप डिफिकल्ट और आइसोलेटेड वर्ड्स सीखेंगे तो आप कभी भी उस वर्ड को यूज नहीं कर पाएंगे। यू विल बी टोटली ब्लैंक लाइक दैट। ओके, व्हाट वाज द वर्ड? आई डोंट रिमेंबर दैट वर्ड। हाउ टू यूज दैट वर्ड? It happened with me and it happens with my students also, that I have experience about it. That's why I'm sharing with you. So please make sure you learn topic related vocabulary. And the second thing I would mention here is improving the sentence structure. Most of the students like me, maybe from the background where they are living in a remote area and they do not have facilities and the best trainers from the world. However, the same journey I had, and I want to share this mistake also with you, that the students, they start learning English, but they don't know how to make structures or sentences in English. And they say that grammar is a difficult part. And I would suggest that grammar is not very difficult if you use it or bring it into application. Grammar is two things. That one is learning grammar theory, which is not useful for a person who wants to speak English. And the other thing is grammar into application. Even in my life, I have become now around C2, that is proficient level, where I have learned the grammar using into application
because I don't know many rules about grammar, but I am able to use it wherever I want to use it. मेरे इस 13 सालों के एक्सपीरियंस में एक चीज मुझे जो हमेशा खलती है, जो मुझे दुख देती है, वो ये है कि स्टूडेंट हमेशा शॉर्टकट अपनाना चाहता है। जब भी मैं आइल्स के लिए किसी कैंडिडेट को बेसिक से उठा के इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे ले जाना चाहता हूं, कैंडिडेट विल ऑलवेज लुक फॉर शॉर्टकट, और कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर जो अपने आप को सेल्समैन बताता है, आता है और कहता है कि मैं आपको सर्टिफिकेट बिना प्रेपरेशन के दिला दूंगा। इन माय career of 13 years, I have never found such a thing, because this is a misleading thing for many candidates. बहुत से कैंडिडेट्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं और वो अपने सालों की मेहनत, साल और पैसे बर्बाद करते हैं। मेरा ये एक मैसेज है सोसाइटी के लिए कि इन लोगों से बचा जाए और कोशिश की जाए कि अपनी मेहनत से ही बैंड स्कोर लिए जाएं, क्योंकि जब आप आइल्स या पीटी या टॉफल करने के बाद एयरपोर्ट पे जाते हैं और आपका इमिग्रेशन चेक होता है, उस वक्त आपको इंग्लिश की वैल्यू का पता चलता है। और सम स्टूडेंट्स आर बीइंग डिपोर्टेड ओनली फॉर दिस रीजन। कुछ स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया जाता है एयरपोर्ट से फॉर बाइंग अ फेक सर्टिफिकेट और रिप्रेजेंटिंग अ फेक सर्टिफिकेशन। सो मेरा सजेशन यही है कि अपनी मेहनत से बैंड स्कोर लें, अपनी मेहनत से काम करें और अपने लेवल ऑफ इंग्लिश को इंप्रूव करें। ये एक इजी थिंग है, ये बहुत ही इजी है अगर आप डिसाइड कर लें कि मुझे इसे करना है। बहुत से कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर मेरा स्कोर 6, 6.5 बैंड से 7 पे नहीं जा रहा, मैं एडवांस नहीं हो पा रहा राइटिंग में, तो कारण क्या है? तो मेरा सजेशन, अगर आप मान लोगे तो आप 7 छोड़ो 7.5 बैंड आपके आ जाएंगे। तो सजेशन यही है कि आप एक जैसे सेंटेंसेस कभी मत लिखें, आप अपने सेंटेंसेस में वैरायटी लेके आएं। आप जब पढ़ रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, उसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स ढूंढें, उन स्ट्रक्चर्स को आप कॉपी कर लें। और उन स्ट्रक्चर्स को कॉपी करना ही अकेली बात नहीं है, अगर कॉपी होगा तो आपका स्कोर कम हो जाएगा। आपको क्या करना है, कॉपी करने के बाद अपना वर्जन, एक्सक्लूसिव वर्जन, यूनिक वर्जन ऑफ दोज सेंटेंसेस आपको बनाना है। अगर आप अपने सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे, I would not say you need thousands of sentences, you need just few of them. I would say 15 to 20 would even help you, and you should be having those in proficient level, means आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, and you can definitely get a good score in your writing. And I would suggest, if you want to improve your writing, you should always try to have a trainer or a guide for you for even few days, maybe 1 lesson, 2 lessons can help you out. एक बात दिल से कहना चाहूंगा, अगर आपका कोई सपना है किसी भी तरह का, उस सपने को अचीव करना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप ठान लें और आप मान लें कि मुझे ये करना है, आइल्स, पीटी, टॉफल या कोई भी टेस्ट आप नेम लें, वो मैं मेरे स्टूडेंट्स को 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि वो कर सकते हैं। और जब वो मेरे पास आते हैं तो एक ही चीज उनके माइंड में होती है कि सर क्या मैं ये टेस्ट कर सकता हूं? तो मेरा ये सवाल आपसे है कि आप ये टेस्ट करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट को कर जाएंगे। आपको दुनिया का कोई दूसरा पर्सन ये नहीं कह सकता कि आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने डिसाइड किया है, आप कर जाएंगे। दैट्स माय श्योरिटी, एंड योर ट्रेनर कैन हेल्प यू इन 100 ways। बट अगर आपने डिसाइड नहीं किया और सेल्फ डाउट करते हैं अपने ऊपर, तो दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वुड फेल। तो आपको यही कहना चाहूंगा, इस टॉक को एंड करते हुए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें और अपने सपनों को सच करने में कॉन्फिडेंस रखें। आप जो भी डिसाइड करेंगे वो जरूर पूरा होगा। थैंक यू जॉश टीम, एंड थैंक यू माय ऑडियंस।